Welcome back, guys. अब हम करेंगे Kinematics Paper 2 Question 19 and Question 20. So let's start. Question 19. A car accelerates from rest in a straight line. During the first 14 seconds, the acceleration is uniform and the car reaches a speed of 25 meters per second. Calculate the acceleration of the car. Acceleration will be equal to V minus U divided by T. A is equals to V क्या है फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल्स टू V 25 initial velocity is 0 divided by T is 14 so A will be equals to 25 divided by 14 which is 1.7856 1.7856 1.8 लिख लेते हैं 1.8 एस्टिमेट दे दिया उन्होंने आंसर का which is a round off ठीक है ना आगे after the 14 seconds the speed of the car continues to increase but the acceleration is decreasing acceleration decrease हो रही है the car will still gain speed but at a lower speed a lower rate from 70 to 80 the car start after the start the car moves at a constant speed of 55 meters per second अच्छा पहली बात 70 will be here और उसके बाद पहले after first 14 seconds 2 4 6 8 10 12 14 this is the first 14 seconds अच्छा the first 14 seconds the car अच्छा पहले 14 seconds में कितनी गई है कार 1 2 3 the car has increased in the car has increased 25 meters per second तो जो पहली वैल्यू होगी it will be between this will be the first mark because पहले गाड़ी जो है उसकी constant acceleration थी so the speed will increase gradually right but later on they have mentioned के the acceleration decreases मतलब the car will no longer be accelerating at the same rate it used to ठीक है ना तो उसकी acceleration slowly decrease होगी so till the speed of 55 the car की acceleration will decrease 55 will be ये मुझे पहले बना लेना चाहिए था 55 ये होगा 58 56 this will be 55 और this will be 70 तो यहां से यहां तक द गाड़ी की जो एक्सेलरेशन है दैट विल डिक्रीज और इधर आके द कार्स एक्सेलरेशन विल रीच अ कांस्टेंट कांस्टेंट वैल्यू व्हिच इज 50 क्या है द कांस्टेंट वैल्यू इज 55 ठीक है ना कांस्टेंट वैल्यू हैज बीन रीच एंड व्हिच इज 55 so this is what the graph will look like आगे अब मैं आपको एक दफा ग्राफ समझा देता हूँ आई थिंक आई मेड अ वेरी पोर चॉइस ऑफ नॉट मेकिंग इट पहले तो पहले फर्स्ट 14 seconds में the car will have a constant acceleration so constant acceleration means के अगर acceleration is constant sorry the acceleration is constant then the एक second speed time graph will look something like this in each interval of time the car will increase a set amount of वेलोसिटी फॉर एग्जाम्पल आपकी एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड तो आपकी वेलोसिटी होगी पहले सेकंड में 2 मीटर पर सेकेंड दूसरे सेकंड में 4 मीटर पर सेकेंड तीसरे सेकंड में 6 मीटर पर सेकेंड आफ्टर दैट इन दिस टाइम द कार्स velocity is still increasing but the acceleration is decreasing
फॉर एग्जाम्पल इफ द एक्सेलरेशन वॉज 4 मीटर्स पर सेकेंड, थोड़ी देर बाद 3 मीटर्स पर सेकेंड होगी, फिर 2 मीटर्स पर सेकेंड होगी, फिर 1 मीटर्स पर सेकेंड होगी. द स्पीड विल स्टिल इंक्रीज बट एट अ लोअर रेट. और आखिर में द कार हैज रीच्ड अ constant velocity at which the car is no longer gaining velocity or losing velocity. So it is a constant velocity. So that means the car, जब मतलब आप 55 की स्पीड पे पहुंच गए हो तो गाड़ी 55 की स्पीड पे ही जा रही है अब, between this point and this point. आगे 20. The mass of the ship is 2.2 into 10 raised to the power 8. The engine are switched off and the resistive force caused the ship to decelerate. The mass is 2.2 into 10 raised to the power of 8. The ship का जो resistive force है, it is 2.8 into 10 raised to the power 8. Calculate the initial deceleration of the ship. अच्छा, we'll use the formula F is equals to ma. F is equals to ma. Force क्या होगा? 2 into 8, 2 into 10, 2.8 into 10 raised to the power of 8. ठीक है ना? और उसके बाद the mass will be this. I should just copy it. Oops. इसको delete कर दूं. I'll just copy this value. Oh, I forgot. Sorry. अच्छा, आगे 2.2 into 10 raised to the power of 8. Again. Sorry. I don't know why I'm making so many mistakes. आगे into the acceleration into a. If we divide this value by 2.2 into 10 raised to power 8, we'll get, let's see, we'll get a value of, sorry, it is, it is 6. My bad. मैंने गलती कर दी. फिर से. So this is 6. So if you divide these two values, what you will get is 0.013 0.013 meters per second square. ठीक है ना? That's the value you will get. आगे चलते हैं. As the speed of the ship decreases, the deceleration decreases. अच्छा, अब मैं आपको समझाता हूँ. So some of the resistive forces which are acting on an object are related to speed. ठीक है ना? For example, जितनी ज्यादा स्पीड होगी acting on an object, उतना ज्यादा उसको ये resistance लगेगा. That's why like जो parachutist होते हैं, they reach a terminal velocity. So in water there is a similar case. जब एक शिप जा रही होगी, a ship is moving, right? तो what will happen is, जो शिप होती है ना, जो मूव कर रही होती है, आप देख रहे होंगे दो लहरें बन के ना बीच में से आ रही होती हैं. देयर आर टू वेव्स जो उसको सेपरेट कर रही होती है और शिप को हैज टू सेपरेट देम. सो इफ द शिप स्लोज डाउन, देन इट विल हैव टू सेपरेट लेस वेव्स और उसको कम पानी हटाना पड़ेगा अपने सामने से, राइट? सो इफ दैट हैपेंस, the deceleration will change. I'll repeat it again. When the ship is at a certain speed, उसको ज्यादा पानी हटाना पड़ेगा, right? To move further. But if the speed is lowered, it will have to, like, उसको कम पानी हटाना पड़ेगा. So that is what I'm talking about. The resistance is dependent on what the speed is. And that is what also happens with parachutists. So
This is the answer. Okay, let's move on. शुक्र है इसका मैंने ग्राफ बनाया. On figure 9.2, sketch a possible speed time graph for the ship as it decelerates to rest. अच्छा, जब मैंने आपको बोला जब वो पहले पहले शुरू में स्पीड डिक्रीज करेगी ना, जो उसके ना जो रेजिस्टिव फोर्सेस है, इट विल डिसेलरेट. ठीक है ना, उसके रेजिस्टिव फोर्सेस जो है दे विल डिक्रीज. तो जब रेजिस्टिव फोर्सेस डिक्रीज होंगी उसकी स्पीड जो है वो आहिस्ता कम होगी, उसकी जो डिसेलरेशन होगी वो कम होगी. व्हाट आई हैव सेड इज कि अगर उसकी जो स्पीड है, उसकी जो रेजिस्टिव फोर्सेस है, इट इज डिपेंडेंट ऑन द स्पीड, और स्पीड कम हो जाए तो द रेजिस्टिव फोर्सेस विल लेसन, और जब रेजिस्टिव फोर्सेस लेसन होंगे द डिसेलरेशन विल डिक्रीज एज वेल. That's what I'm trying to say. As I explain how the distance traveled by the ship may be determined by the speed time graph. The speed time graph का जो area under the graph है, that gives us the distance. So that is it for this video. I hope you enjoyed. Thank you for watching.